Good evening, poets, translators, and poetry lovers. Namaste and welcome to Kritya Poetry East and West. On behalf of Kritya, I warmly welcome all of you joining us from different parts of India and across the world for today's poetry reading. Poetry has always disregarded borders and broken barriers, moving across languages, cultures, nations, memories, and histories. It carries voices across, distances over and above differences, prejudices, politics, and geography. Tonight's gathering continues that journey. In this session of Kritya Poetry East and West, we bring together four distinguished poets from four different literary and cultural landscapes. Nilim Kumar from Assam, India, Rei Berroa from the Dominican Republic, Carolina Rivera Escamilla from El Salvador, and Ashish Gaur from Mumbai, India. The poets will read in the language in which the poems have been composed originally, and also alongside that, English and Hindi translations will also be presented of some of the poems at least, allowing us to experience both the music of the source language and the resonances of translation. We are delighted to have with us our host for the evening, the founder of Kritya, the mentor, poet, translator, editor, Rati Saxena. I request Madam Rati to offer her welcome remarks. Thank you. Rati, no sound. Madam, you also have to put on your mic. Sorry. Thank you, Kamlakar. Thank you, all the poets who join us. Every time we have the same thing, what we talk, that Kritya has, it is a first poetry festival in India. It started in 2005. And it was one of the festival which was nomadic, going to different places and using the different languages. And we had a good number of international poets also. Until 2017, we were doing organizing this festival in Kerala and some places like Bangalore and Punjab and Madhya Pradesh and etc., Maharashtra, etc. But after 2017, we are not able to do, as in we have done online in Corona time, 2020 and 2021, along with our Kritya talks. Now, after a long time, we have started again. I think this is our third month, eighth festival, poetry reading and book talk. Which is organized by Kamlakar Bhadji, who is a great poet, translator, and a very good organizer. So we are, this is our Kritya's history, which I always repeat, and I am thankful to you, all of you, for your poetry and your participants. Thank you very much. Thank you, Ma'am Rati Saxena. Yes, Kritya has been running these online poetry readings for the past couple of months, in a way shifting from the face-to-face festivals it used to have earlier very successfully for several years. Now we are trying to have more number of readings and more frequently. And we are so happy that we have such wonderful poets this evening. We have a small change in the sequence today than the one that we have announced, and we'll begin with
Dr. Ashish Gaur. Um, Ashish is a thinker and poet based in Mumbai. He is a surgeon and works in cardiac surgery and transplantation field. He is the author of two Hindi poetry collections, Sir Shab Sulagte Kwab and Uha Po. He has also contributed as a co-author to 4 other books. Writing under the names Jazbaat and Bolta Kagaz, and sharing his work through platforms such as Ganganagar Talkies, Gaur approaches poetry not merely as a way of inhabiting, not merely as a literary practice, but as a way of inhabiting experience. Gaur's work is animated by the belief that simply remaining alive can sometimes be an ideological act, and that breathing itself can become a statement of resistance. His poetry is, above all, a search for the meaning of that statement. Now I request Ashish to present his poems. Thank you. Thank you, Kamlakar ji and Rati madam, for giving me an opportunity to be on the page of Kritya and be amongst the eminent poets today. I'll be reciting few of my poetries in Hindi. मेरी पहली कविता का नाम है भैंसें। बंधी रात भर जाड़े में अपने वक्षों में रात को बंद किए, दूध नहीं अधिकार रोके खड़ी, पालती चरवाहों को मांग रही थी सिर्फ पानी की एक धार बदन गीला करने को। अपने अकेलेपन में गालिब फैज को याद करते डकार जाती एल्बर्ट कामू को भी साम्राज्य का आधिपत्य और वर्चस्व भी। विशालकाय विस्मित आंतों के कारखानों में सूखे खेत, हरे जंगल और पूरी नैसर्गिकता डकार गई। देह की अंतःकुहों में कुबड़ी मोटी मक्खियां डार्विन नहीं बल्कि सत्ता के उक्रांत से विकसित रक्त चूसक डंक मारती थी। अंतड़ियों के मंथन ने हक को गोबर कर दिया और दूध मालिक के कंठ उतर गया। खुर और सींग जमीन पर रगड़ उत्पीड़न का अवसाद बांटा उसने बाकी सब भैंसों से। ढलते सूरज को विषाण पर उठाए, विषाण यानी कि सींग, ढलते सूरज को विषाण पर उठाए झुंड में मानवता के विकास की समीक्षा हेतु गर्दन पर सांखलों के खुले सिरे लटकाए, अपनी गर्दन पर सांखलों के खुले सिरे लटकाए, राज्य प्रमाणित मस्ती में सभ्यता के अधिकृत अध्यायों पर पेशाब करती, गोबर बिखेरती व निकली और प्रगति की भाषा को गीला करती। भैंसें काल चक्र के कंबल ओढ़े सींच रही हैं पीढ़ियों दर पीढ़ियों रीढ़ की रक्त से। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है अस्वीकृतियों के वन में। हे पथिक, तुम निरंतर कौतूहल से बचे रहने की प्रज्वल कामना करना। हे पथिक, तुम निरंतर कौतूहल से बचे रहने की प्रज्वल कामना करना। गौरतलब हो यातना और याचना की प्रतिस्पर्धा को फटने से पहले के धुंधलके जैसी होगी। तुम अपने ललाट पर विवेक का चंदन मथ लेना और सूखे नयनों से सबसे नजरें मिलाना। होगा यही कि सभी तुम्हें धिक्कारने लगेंगे और चैनिक मसूड़ों से विकारों के रूखे गाल छिपकाएंगे। तुम्हारे शौर्य का वीर्य अपने नपुंसक होने का एहसास देगा। तुम्हारे शौर्य का वीर्य उन्हें अपने नपुंसक होने का
एहसास देगा, पर तुम तीक्ष्ण बुद्धि थामे सिर्फ चलते रहना। दरकिनार कर इन सभी को समय से सभी कार्य पूरे कर लेना। दरकिनार कर इन सभी को समय से सभी कार्य पूरे कर लेना, और बस जितनी भूख तुम्हारी अतड़ियों में हो उतनी ही साधन बटोर लेना। अंत में अंत आएगा, अपना वेग लाएगा, तुम निरंतर पर अंत तक चलते रहना। सुख की आस छोड़ रास्ते पर औंधे लेटे सूखे पत्तों को चुन लेना। वह बतलाएंगे गहरी जड़ों वाले पेड़ों का जमघट तुम्हें। तुम जाकर सुमन से भरी उन टहनियों पर रख देना सूखे पत्तों को फिर से। तुम जाकर सुमन से भरी टहनियों पर रख देना सूखे पत्तों को फिर से। साग के, पलाश के, गुलमोहर, कदम और देवदार के, साग, पलाश, गुलमोहर, कदम और देवदार के उन पेड़ों में तुम्हें सभी दिखेंगे पक्ष धरता इन सूखे पत्तों के। सभी की टहनियां देंगी कंधा उसे, और अपना लेंगे फिर से सभी जंगल के रास्ते उस सूखे पत्ते को। किंतु मनुष्य वो न सूखे पत्तों सा सहज है, ना पेड़ सा स्वीकार्य करता। वो लौटाया नहीं जाता, बस गिरता है, गिरता रहता है, और गिरकर भी कभी धरती का हिस्सा नहीं बन पाता। मेरी तीसरी कविता का शीर्षक है जब विकल्प समाप्त हो जाते हैं। दुख के क्षणों में मैंने ये जाना कि लाख सोचने पर भी कभी कोई उपाय नजर नहीं आता, और ना ही इस व्यथा का कोई समाधान भी मिलता है। हारता हुआ मनुष्य धीरे धीरे अपने अकेलेपन को पहचानने लगता है। परिस्थितियां जैसी भी हों वैसी की वैसी ही बनी रहती हैं। उन्हें देखने के लिए कोई नई दृष्टि जन्म नहीं लेती। समय निरंतर आगे बढ़ता और बदलता रहता है। और आप अपने ही ठहरे हुए व्रत में कार्य और व्यवस्थाओं के सहारे खुद को बांधे रखते हैं। जो कुछ घट रहा है उसे ठहर कर बाहर से देख पाना कभी कभी इस बात का संकेत देता है कि विकल्प धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। संभावनाओं और विकल्पों का आकलन कर थक चुके मन को बाहरी दुनिया में समझाने की कोशिश करना अक्सर व्यर्थ ही सिद्ध होता है। कभी कभी आवश्यक होता है सबसे दूर खड़े होकर अपने ही विचारों को देखना, मानो वो आपसे अलग कोई एक वस्तु हो। यहीं से वस्तुओं को नई तरह से देखने का सिलसिला आरंभ होता है, और ठीक उन्हीं क्षणों में ब्रह्मांड के गतिमान खगोलीय पिंड आपकी अनुभूतियों से अनभिज्ञ अपने गोलाकार निश्चित वक्षपथ पर निष्प्रथ चलते रहते हैं। अरण्य की गर्भ की शांति आपकी व्यवस्था नहीं सुनती। अरण्य के गर्भ की शांति आपकी व्यथा नहीं सुनती। स्थूल वक्ष अपनी देह पर ओस को वैसे ही सोखे रहते हैं, और हवा से हिलती पत्तियां उसी सहजता से पुष्पों का परांगण करती रहती हैं। मानो संसार की समूची गति आपकी पीड़ा से बहुत परे अपनी ही लय में अविचल बहती चली जाती है। मेरी अगली कविता का शीर्षक है पराजित आदर्शवाद का इतिहास। धृतराष्ट्र के अंधे प्रेम ने खांडव प्रस्थ को हस्तिनापुर बना दिया। विस्थापन कमजोर का नहीं, सशक्त का हुआ।
विधि के विधान से पेड़ उखड़ जाते हैं, हवा सिर्फ निमित्त है। विधि के विधान से पेड़ उखड़ जाते हैं, हवा सिर्फ निमित्त है। कार्बन फुटप्रिंट का सोचकर खादी इमारतों को खड़ा किया गया, या फिर आत्मनिर्भरता एकमात्र योजना रही होगी। कल का सच आज की हकीकत हो यह भी निश्चित नहीं। कल का सच आज की हकीकत हो यह भी निश्चित नहीं। कलिंग युद्ध अशोक की नियति बनी, मगध और मौर्य साम्राज्य सिर्फ निमित्त थे। कलिंग का राज्य जीतकर भी अशोक के भीतर युद्ध चलता रहा। कलिंग का राज्य जीतकर भी अशोक के भीतर युद्ध चलता रहा। जो स्थिर था वह बह गया, जो स्थिर था वह बह गया, जो बहता रहा इतिहास बन गया। हम अराजक नहीं, अराजकता से नफरत करने वालों से समाज को बचाने की कोशिश करते हैं। हम अराजक नहीं, अराजकता से नफरत करने वालों से समाज को बचाने की कोशिश करते हैं। हर सनकी के अंदर पराजित आदर्शवाद छिपा होता है। हर सनकी के अंदर एक पराजित आदर्शवाद छिपा होता है। हारा हुआ आदर्शवाद संग्राम लाता है, यह जरूरी नहीं। हारा हुआ आदर्शवाद संग्राम लाता है, यह जरूरी नहीं। मेरी अंतिम कमलाकर, आप इंग्लिश पढ़ेंगे क्या? इंग्लिश ट्रांसलेशन है इनका? कमलाकर जी, डू यू हैव इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस पोएम? नो, No. एनी ऑफ दिस पोएम? आई सेंड यू. Oh, you had sent me. Okay, okay. No, I haven't translated. I'm sorry. You have not translated. Okay, Yeah. fine. ma'am, I can't hear you. You can read, please, Ashish. Okay, okay, I have time, right? मेरी अगली कविता का शीर्षक है चींटियों का गणराज्य। चींटियों का गणराज्य। जहां घास उग नहीं पाती वहां रेत के टीले जन्म लेते हैं। जहां घास उग नहीं पाती वहां रेत के टीले जन्म लेते हैं। मिट्टी इतनी महीन हो जाती है कि उसकी नाभि के सुराख पर चींटियों का एक दल कतारबद्ध खड़ा दिखाई देता है। चींटियों से परिवारवाद नहीं, चींटियों में परिवारवाद नहीं, बल्कि रासायनिक संकेत अपना नेता चुनता है। जो जितना गहरा सूंघ सकता है उतना ही अधिक लोकप्रिय हो जाता है। महिला सशक्तिकरण। इनकी संसद की नेता महिला होती है। इनकी संसद की नेता सदा ही महिला होती है, जो प्रजनन से अपने दल को मजबूत करती है। महिला सशक्तिकरण का सबसे सटीक उदाहरण इतिहास में चींटी है। महिला सशक्तिकरण का सबसे सशक्त उदाहरण इतिहास में चींटी है। हरकारे कदम ताल में एक स्वर होकर घोषणा करते हैं, समस्त खांड का टुकड़ा जन कल्याण के नाम पर उठा लिया जाएगा। हरकारे कदम ताल कर एक स्वर में घोषणा करते हैं, समस्त खांड का टुकड़ा जन कल्याण के नाम पर उठा लिया जाएगा। एक अंधी चींटी अपनी नाभि से उपजे रासायनिक संकेत के सहारे धरती पर एक लकीर खींच देती है, और वही लकीर सभ्यता का अनुशासन बन जाती है। और वही लकीर सभ्यता का अनुशासन बन जाती है। चींटी की कोई रीढ़ की हड्डी नहीं होती। चींटी की कोई रीढ़ की हड्डी नहीं होती। शायद इसीलिए वह किसी को तार्किक विश्लेषण की अनुमति भी नहीं देती। चींटियों का स्वॉर्म इंटेलिजेंस का वरदान है। चींटियों को स्वॉर्म इंटेलिजेंस का वरदान है। यही आधुनिक काल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई की जन्मदाता भी है। नाभि कमल की गंध सामूहिक मृग तृष्णा जगाती है और समूचा दल अपने अगुआ की दिशा में चल पड़ता है। आधुनिक दुनिया की सोच को नियंत्रित करता एल्गोरिदम भी शायद एक चींटी के नाभि कमल से निकला होगा। सर्दियों में वे गर्म प्रदेशों की तलाश में भटकती रहती हैं। आदिकाल से उनकी सत्ता ततैयों और विष नियंत्रण की प्रकृति व्यवस्था का हिस्सा रही है। चींटी भी खंडित तारों की धूल से बनी यानी कि स्टारडस्ट से बनी एक संगठित चेतना है। स्टारडस्ट का अनुशासित रूप
जो करोड़ों वर्षों से विकास यात्रा का नेतृत्व करती आई है। उसके समाज में सामूहिक अनुशासन है, उसके समाज में एक तरह का सामूहिक अनुशासन है, अहंकारहीन श्रम है, पर मैं का कोई महिमा मंडन नहीं है। और फिर भी चींटियों की कॉलोनी लेट कैपिटलिज्म का सबसे सटीक उदाहरण रही है। और फिर भी चींटियों की कॉलोनी लेट कैपिटलिज्म का सबसे सटीक उदाहरण रही है। अंतहीन काम, व्यक्ति का विलय और उत्पादन का अनवरत चक्र। आपने आखिरी बार चींटी को कब देखा था? आपने आखिरी बार चींटी को कब देखा था? शायद व्यवस्था, सामूहिकता और अहंकारहीन श्रम की सारी बहसें चींटी से शुरू होकर उसी पे आकर समाप्त हो चुकी है। मेरी आज की आखिरी कविता है टूटती परिभाषाएं। तोड़ना और टूटना दोनों एक दूसरे से एकदम अलग नहीं है। तोड़ना और टूटना एक दूसरे से अलग नहीं है। टूटता है रिश्ता और बिखर जाता है सब कुछ। सब कुछ बिखर जाना इंसान को अंदर तक तोड़ जाता है। टूटता है जिस्म, थक कर दिन भर मेहनत कर और फिर भी कुछ नहीं मिलता। टूटता है जिस्म, थक कर दिन भर मेहनत कर और फिर भी कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलना अंदर से तोड़ जाता है। सब कुछ पाने की कोशिश में, सब कुछ पाने की कोशिश में टूट जाती है उम्मीद कुछ इस कदर। उम्मीद का टूट जाना अंदर से तोड़ जाता है। तोड़ना और टूटना एक दूसरे के ही अंग हैं। तोड़ना और टूटना एक दूसरे की ही अभिन्न अंग हैं। पुल के टूट जाने से बह जाती हैं बहुत सारी जानें। पुल के टूट जाने से बह जाती हैं बहुत सारी जानें। बह जाते हैं खेत खलियान। भूख से बिलखती जानें अंदर से देश को तोड़ जाती हैं। भूख से बिलखती जानें अंदर से देश को तोड़ जाती हैं। टूट कर गिर जाते हैं फल टहनी से। टूट कर गिर जाते हैं फल टहनी से। गिरने लगते हैं टहनियों से घोंसले आंधी में। एक बेजान पक्षी की मृत देह, एक बेजान पक्षी की मृत देह उस पेड़ को अंदर तक तोड़ जाती है। फांसीवाद की बढ़ती आहट में, फांसीवाद की बढ़ती आहट में धीरे धीरे जब दब जाती हैं आवाजें। सवालों की गर्दन पर रख दिए जाते हैं भय के जूते। चुप्पियों का एक लंबा अंधेरा अंदर तक तोड़ देता है समाज को। सोशलिज्म की लुप्त होती परिभाषा में, सोशलिज्म की लुप्त होती परिभाषा में बराबरी सिर्फ किताबों में ही रह गई है। बराबरी सिर्फ किताबों में ही रह गई है। रोटियों का हिसाब जब धर्म आंकता है, रोटियों का हिसाब जब धर्म आंकता है और आदमी की कीमत जब तरक्की का आधार होती है, इस कदर बदलता समय अंदर से तोड़ देता है इस अर्थहीन दुनिया को। रुई के सहारे खड़ी बाती, कुछ चंद पंक्तियां। रुई के सहारे खड़ी बाती जलती है घंटों तक उसके सामने। टूट जाती है जब आस्था, टूट जाती है जब आस्था, तब अंदर से बाहर तक तोड़ दी जाती है एक अमूर्त व्यक्ति की आत्मा। तोड़ना और टूटना इस चलायमान जीवन के दो अखंड सत्य हैं। तोड़ना और टूटना इस प्रकृति और इस निश्चल जीवन के दो अखंड सत्य हैं। धन्यवाद। Thank you, Ashish. What wonderful poetry you read. I'm so happy to have made your acquaintance tonight, and I'm so happy to. This is the first time I'm listening to your poetry. I'm so very sorry that although Ma'am Rati Saxena had sent me the poems and I was supposed to translate them, but it I guess it kind of escaped my attention since I was a little preoccupied. Also, it escaped my attention. I'll try to make up for this, but thank you so very much. Such lovely poetry, really strong and bold. Thank you so much, Ashish. And now we move on to another very strong poet, a poet who I have also have had the pleasure of translating to Kannada. In fact, many of his poems I could not help but translate when I first encountered
Nilim Kumar's poetry. Although this is the first time I'm face to face with him, Nilim Kumar, so happy to have you, so happy to, well, meet you online. And let me introduce Nilim Kumar first, and then say a couple of words about how much I love his poetry. Nilim Kumar is a distinguished Indian poet writing in Assamese and one of the most significant voices in contemporary Indian literature. He has published 24 collections of poetry, 3 novels, and several volumes of prose. His work has been translated into numerous languages, including English, Hindi, French, Spanish, German, Bengali, Marathi, Punjabi, Kannada, Urdu, Tamil, and Nepali. Collections of his poetry have appeared in English, Hindi, Punjabi, and Bengali translation, and hopefully very soon in Kannada also, Nilim. His poems are taught at several universities, including Delhi University, Guwahati University, Dibrugarh University, Cotton University, Mizoram University, Bodoland University, KK Handik State Open University, Bhattadev University, Kumar Bhaskar Verma Sanskrit and Ancient Studies University, Bengaluru City University. He has received numerous honors, including the C. Narayana Reddy National Literary Award, Kusumagraj National Award, Uday Bharati National Award, Raza Foundation Award, and Eagle Sahitya Award. Invited by the Sahitya Academy, he has represented Indian literature in Bangladesh and participated in Indo-French cultural exchange programs. He lives in Guwahati, Assam. Nilim Kumar's poetry I came across in Divya Jyoti Sharma's translation in the collection I Am Your Poet, and such luxuriant poetry, almost bordering on surreal and so haunting, and it definitely remains in your mind when you listen to Nilim Kumar, when you read Nilim Kumar. And we are so happy that he has joined us this evening. Nilim, over to you. Let us have some poetry. Thank you, Kamrakar. So I will read my poem first in original Assamese. So first poem, Sagor. এইভাবেই সাগৰে কাহানিও শুব নোৱাৰে, এইভাবেই সাগৰে কাহানিও শুব নোৱাৰে, সদায় জোনটোৱে তৰাবোৰৰ সতে তাৰ বুকুত গা ধুবলৈ আহে, বতাহেও তাৰ লগত শুব খোজে, মাছ আৰু শামুকবোৰেও, নাও আৰু জাহাজবোৰে এঙুৰীয়া কৰে তাৰ বুকু, কিন্তু সি প্ৰেমত পৰে শামুক বুটলি ফুৰা সেই ছোৱালীজনীৰ, যি তাৰ বুকুত নানামে, এইভাবেই সাগৰে কাহানিও শুব নোৱাৰে. Now I will read my poem in Hindi. नमक. This is salt. नमक. दूध की तरह नमक भी सफेद हैं, दूध की तरह नमक भी सफेद हैं, झकझक सफेद. नमक और कुछ नहीं, दुख ही है. यह पृथ्वी का 3 भाग पानी, दुनिया के आंसू ही हैं, इसी से बनता है नमक. नमक खाते हैं इसलिए हमारा खून नमकीन है, आंसू नमकीन है, पसीना नमकीन है, यहाँ तक हृदय भी. हृदय तो है ही दुखों का भंडार, हृदय तो है ही दुखों का भंडार, नमक का भंडार. इसीलिए दिल के रोगियों को मना होता है नमक खाना. नमक खाकर ही हम दुख भोगते हैं, नमक खाकर ही हम दुख भोगते हैं, इसलिए हमारे जीवन का 3 भाग दुख है. फिर भी नमक सबका प्रिय है, फिर भी नमक सबका प्रिय है, नमक के बिना हमारे पेट में अन्न नहीं जाता. नमक बिना स्वाद होता है मीठा, हमारे जीभ को सबसे ज्यादा पसंद है नमक. कारण अकारण हम नमक खाते हैं, कारण अकारण हम नमक खाते हैं,
कारण अकारण हम दुख भोगते हैं। सुख में भी हमारे आंसू नमकीन होते हैं, दुख में भी हमारे आंसू नमकीन होते हैं। बच्चे नमक नहीं खाते, बच्चे नमक नहीं खाते, उन्हें दूध में खुशियां यानी चीनी मिलाकर देनी पड़ती है। इसके बाद धीरे धीरे एक दिन उन्हें भी अच्छा लगने लगता है नमक। तब माएँ पड़ोसियों के आगे घोषणा करती हैं, उनके बच्चों को दूध अच्छा नहीं लगता है, पसंद है केवल नमकीन, केवल नमकीन। इसी तरह बच्चे भी धीरे धीरे नमक के शिकार होते हैं, दुख के शिकार होते हैं। पेड़ पौधों को भी नमक पसंद है, पेड़ पौधों को भी नमक पसंद है, नमक पाकर वो बढ़ते हैं। जंगल के जानवर क्या नमक पसंद करते हैं? करते होंगे, लेकिन उन्हें मिलता कहाँ होगा, कैसे खाते होंगे पता नहीं। लेकिन पालतू मवेशी नमक पसंद करते हैं। गृहस्थ उन्हें नमक खिलाकर अपने दुख का सहभागी बनाते हैं। एक दिन नमक ने मुझसे पूछा, हाथी के साथ मेरा क्या संबंध है जो हाथी के मरने पर मेरे साथ दफनाते हैं उसे? पूछा, उस ताकतवर जानवर के अंदर भी कोई दुख है क्या जिसे नमक से ढकना पड़ता है? मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। नमक को कैसे समझाऊं? आदमी का विज्ञान, नमक भी भावुक है। जब इंसान नहीं रहेगा तब भी रहेगा नमक, जब इंसान नहीं रहेगा तब भी रहेगा नमक, जब दुनिया नहीं रहेगी तब भी रहेगा नमक, क्योंकि तब ईश्वर आंसू बहाएगा, तब ईश्वर आंसू बहाएगा, और आंसू का मतलब ही तो नमक है। नमक बचा रहेगा ईश्वर का आंसू बनकर। यह रहस्यमय और गूढ़ नमक, जिसने हमें इतना दिया है, इतना दिया है, जिसने दी है हमें जीवन का अमूल्य संपदा, दुख का पाठ, जिसने दिया है हमारे जीवन में तैरने को आंसुओं का एक समंदर, उस नमक को मेरा नमस्कार, उस नमक को मेरा नमस्कार। सेकंड पॉइंट इन हिंदी। आकाश के खिलाफ एक कविता। आकाश के खिलाफ एक कविता। आकाश की मत करो परवाह, आकाश की मत करो परवाह। आकाश क्या है? आकाश मात्र है एक चलवा, एक विशाल नीला आकार धारण कर लिया है जिस चलवा ने। दरअसल शून्यता का नाम है आकाश, दरअसल शून्यता का नाम है आकाश, रिक्त स्थानों का नाम है आकाश। अलमीरा के खांसों में, रास्ते में पड़ी खाली बोतलों के अंदर वो आकाश है। हमारे आने जाने वाले रास्तों में, घर के कोने में, बिस्तर के नीचे वो आकाश है। लेकिन कोई भी उन्हें आकाश नहीं बोलता, लेकिन कोई भी उसे आकाश नहीं कहता। हमारे सिर के ऊपर शून्यता, 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 शून्यता से बने नीले तंबू को ही हम लोग आकाश कहते हैं। कितना झूठ एक नजरे का नाम है आकाश। फिर भी ऐसा लगता है जैसे आकाश पोष रहा है हमारी धरती को। धूप के लिए हम लोग देखते हैं आकाश की तरफ, जबकि धूप और बरसात का कोई संबंध है ही नहीं आकाश से। थक जाने पर, पराजित होने पर हम लोग देखते हैं आकाश की तरफ। नींद न आने पर बिस्तर से उठकर हम लोग देखते रहते हैं आकाश की ओर, मानो आकाश के किसी तारे ने चुरा ली है हमारे नींद। इसी तरह अनेकों झूठी कहानियों को जन्म दिया है आकाश ने हमारे खोपड़ी के अंधकार में। बार बार झकझोरा है आकाश ने हमारे भावनाओं को। कितना झूठ एक चित्रांकन का नाम है आकाश। लगभग प्रलाप कहा जा सकता है हमारे बातचीत को जब हम कहते हैं सिर के ऊपर के आकाश की बातें। Nilim ji, would you be reading? There are two poems that I would like to read in English.
Would you be reading those poems, Beautiful Women and the Rain? Huh? Oh, The Rain Aboard Yes, the yes, Bus. Yeah. तो मैं देखता हूँ। तो हिंदी में, हाँ, हिंदी में पढ़ सकता हूँ। हाँ जी, आप हिंदी में पढ़िए। I'll read it in English. Oh yes, yes. अफरोजा ने मेरे लिए खजूर भेजे हैं। यह पढ़ेंगे? चलेगा। Yeah, sure. या आप पढ़ना चाहते हैं क्या ये? अच्छा, यही पढ़ूंगा। अफरोजा ने मेरे लिए खजूर भेजे हैं। रमजान का महीना, अफरोजा ने मेरे लिए खजूर भेजे हैं। भाईचारा नाम के एक पैकेट में। एक छोटे से कागज पर लिखा है, खजूर खा लेना भाईजान। मेरा रोजा नहीं है, ना सहरी ना इफ्तार है। अफरोजा ने मुझे अपने हिस्से का इफ्तार के खजूर भेजे हैं, भाईचारा नाम के पैकेट में। किसी ने धीरे से मेरे कानों में कहा था, मक्का के खजूर खाना मना है। Hello. कर Hello. हेलो, Hello. किसी ने धीरे से Please प्रॉब्लम है क्या? किसी ने धीरे से मेरे कानों में कहा था, मक्का के खजूर खाना माना है। अफरोजा ने मेरे लिए मक्का के खजूर भेजे हैं। काले काले खजूर हाथ में लिए मुझे कोई अल्लाह या ईश्वर याद नहीं आया। मेरी आंखों के सामने तैर उठे दूर किसी रेगिस्तान में तपती धूप में पसीने से भीगे खरे खजूर के पेड़। मेरी आंखों में उभर आए रात की चांदनी में भीगते खरे वही खजूर के पेड़, जो अल्लाह और ईश्वर को नहीं पुकारते, बस पुकारते हैं इंसान को। वे खजूर के पेड़ नहीं जानते, वे खजूर के पेड़ नहीं जानते अल्लाह कौन है, ईश्वर कौन है। अफरोजा ने मेरे लिए खजूर भेजे हैं। अफरोजा, अफरोजा, अफरोजा। वही अफरोजा जिसने मस्जिद होते हुए भी अपने सीने में एक मंदिर बसा लिया था। रमजान का महीना है, अफरोजा ने मेरे लिए खजूर भेजे हैं, भाईचारा नाम के एक पैकेट में, धर्म निरपेक्षता के पते पर। Amazing poem, Nilim ji. Let me read the English translation by Uttam Yes. Duvora. Afruza has sent me date fruits. It is the month of Ramzan. Afruza has sent me date fruits in a packet called Brotherhood. On a small piece of paper, she has written, "Eat the dates, Bhaijan. I don't keep roza. There are no sehri iftar. Afruza has sent me dates from her portion of iftar in a packet called Brotherhood." Someone whispered into my ears, "Eating dates from Mecca is forbidden." Afruza sent me dates from Mecca. Taking the black dates in my hands, I am reminded neither of any Allah or God. Before my eyes are wafting the sweating date palms standing in the heat of the sun of the distant desert. Those date palms standing drenched in the moonlight of night. Those palms who don't bawl at Allah and God, they keep bawling at humans. The date palms know not who after all is Allah, who after all is God. Afruza has sent me date fruits too. Afruza, 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 that very Afruza who even after having a masjid had constructed a temple in her bosom. It is month of Ramzan. Afruza has sent me dates in a packet
called Brotherhood at the address of secularism. Over to you, Nilim. Next, I will read another poem. उस जानवर का नाम क्या है? उस जानवर का नाम क्या है? उस जानवर का नाम क्या है जिसकी भूख कभी नहीं मिटती, जिसे नहीं पता अपने पेट का माप, जो नहीं जानता कितने खाने की जरूरत है उसे। चिर भूखे उस जानवर का नाम क्या है? वो क्या नहीं खाते, वो क्या नहीं खाते, जमीन, घर, पुल, पोखर, पेड़, नदी के घाट। उस जानवर का नाम क्या है जिसकी भूख कभी नहीं मिटती, हमेशा रहता है भूखा। हंसते हंसते खा डालता है अकबर, टीवी, खेत, पहाड़, बगीचे, लोगों के सपने। उसका पूरा परिवार अभी भूखा है, उसका पूरा परिवार अभी भूखा है। उस जानवर का नाम क्या है जिसकी उस जानवर का नाम क्या है जिसकी भूख कभी नहीं मिटती, जो नहीं जानता अपने पेट की भूख। आओ सभी मिलकर उसके लिए प्रार्थना करें ताकि खत्म हो उनकी घातक भूख, ताकि शांत हो उसके पेट की आग, ताकि ले सके राहत की आसास सब लोगों ने। थैंक यू, धन्यवाद। Okay, thank you. Nilimji, I'll read the English version of this poem. I suppose this is also translated by Uttamji. What is that animal? What is that animal whose hunger is insatiable, that is not aware of the measure of its stomach, does not know how much food it needs? What is its name? The omnivorous being. What does it not devour? Earth, houses, bridges, ponds and tanks, trees, both the banks of the river. What is that animal whose hunger is insatiable, remains always in a state of hunger? It devours with a smile papers, television sets, fields, hills, gardens, dreams of the people. Its entire family is now rolling in hunger. What is that animal whose hunger is insatiable, that does not understand the hunger in its stomach? Everyone, please pray for it, so that its perilous hunger goes away, so that the fire in its stomach is doused, so that everyone can let out a sigh of relief. Thank you, Nilimji. Would you be reading one more poem? I think we have time for one more poem by you before we move on to Rei. Yes, a short poem. चलो आज बाहर खाने चलते हैं, साफ शीतल हवा चल रही है, साफ शीतल हवा चल रही है, चलो आज बाहर खाने चलते हैं। आज वापस लाते हैं हम दोनों को जो खो गई है कहीं। आज उस अतीत के हमारे दोनों हाथों को एक दूसरे को पकड़ने देते हैं। चलो साफ शीतल हवा चल रही है, चलो आज बाहर खाना खाने चलते हैं। चलो आज हम अपनी परछाइयों को खाने की मेज पर बैठाकर बात करते हुए जरा नजदीक से देखते हैं। दोनों परछाइयां एक भी जुट नहीं बोल पाएगी, क्योंकि उनके पास बात करने के लिए जीभ नहीं है। निशब्दता उनकी भाषा है, निशब्दता उनकी भाषा है। आओ आज उन्हें सुनते हैं। ठंडी साफ हवा बह रही है, आज बाहर खाना खाने चलते हैं मृत्यु नाम के होटल में। थैंक यू। Thank you, Nilimji. Thank you so much for those wonderful poems.
I was saying earlier that your poetry has this absolutely stunning quality by which I was mesmerized when I first encountered it. I'm sure our listeners also would have experienced it. Now we move on to another fantastic poet and a great human being, Rei Berroa. Let me introduce him. Rei Berroa is from Dominican Republic. He's a poet, translator, literary and cultural critic who is professor emeritus of Spanish and Latin American literature and cultural criticism at George Mason University, Virginia. He has 3 critical works to his name and 7 books of poems, including the Book of Fragments published from Calcutta in 1992. One of his collections sold out on the very day of its publication in Caracas in 2007. And just before we started, he shared with us another amazing story about a poem that he read in Turkey, leading to the release of one of the imprisoned persons. His work has been partially translated into more than 40 languages. He received the Trieste International Lifetime Achievement Award for Poetry in 2011, for which the Trieste Festival published the Italian selection of his work. In 2012, he received the Mihai Eminescu Prize from Romania, and a Romanian anthology was published. In 2014, the Ministry of Culture dedicated the 8th Dominican Book Fair in New York to his work and published an extensive anthology of his poetry. Since 1992, he has coordinated the Teatro de la Luna Poetry Marathon in Washington, D.C., featuring readings held both at the theater and at the Library of Congress. To date, he has published 16 anthologies of this marathon. In 2022, he co-founded the World Poetry Day Festival Online, 24 hours of uninterrupted poetry readings featuring over 400 poets from more than 50 countries, reading over 1,000 poems in their original language. And I have been a part of that, so I can assure you that it's an amazing poetry festival that has been going on. Rei also has published anthologies of the festivals twice, in 2022 and 2023. And if you read and listen to Rei's poetry, you will discover in his poetry a restless, compassionate meditation on language itself. It's as if he's weaving together the intimate and the political. I discover a lyrical urgency that refuses easy consolation. Why should I talk about it? We should listen to him. Rei. 1 minute. I have translated his 3 poems. So first poem, second poem, and third poem. So you can read in Spanish or English. I will read in Hindi. Rei, did you hear? Okay. First poem. Can you tell me? Can you tell me which are the poems that? Every poem is a love poem. First one. Oh, okay. Then second one is cock. So I will read the poem in Spanish first, then in English. Okay. And then if there is a translation. I have translation. Okay. If there is a translation of a poem, in fact, it is better for us to read the poems that have been translated into Hindi, because that way we give a more complete window to the poetry. La bolsa o la vida. Todo poema de amor es un poema de lucha. Todo poema de lucha es un poema de amor. En los dos, queramos o no, nos jugamos la vida.
in English, or your life. Every love poem is a poem of struggle. Every poem of struggle is a poem of love. In both, whether we like it or not, we stake our lives. Now, now in Hindi, अथवा तुम्हारी जिंदगी, हर एक प्रेम कविता संघर्ष की कविता है. हर एक संघर्ष की कविता प्रेम कविता है. हम चाहें या न चाहें, दोनों में ही अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं. शुक्रिया. थैंक यू. नेक्स्ट. The second poem is the one Kamalakar was referring to when he was introducing myself, and it's titled Gallo del Alba in Spanish. I'll read it first in Spanish and then in English. Gallo del Alba. Lo prendieron por exceso de futuro, por la furia de su cresta distinguida, por la vaina de su boca al hueso vivo, por sus piernas indecentes y agrietadas y el aplauso de la gleba enmudecida. Lo prendieron porque aireaba con su canto que el vacío de la noche terminaba, que la luz de un llanto sobrio establecía sus vibrantes espectros juveniles en la piel de la mañana. Lo prendieron por exceso de alegría, por hacer que el hombre tienda su estatura y cruce a cada paso nuevos puentes y levante polvaredas de guitarras sobre el musgo desprendido del camino. Lo prendieron, ya se sabe, a todas horas, le violaron su aparente inocencia florecida, le mordieron sus bordes impacientes, su rocío, mas tuvieron que dejarle repetir el hechizo de sentirse pregonero de la luz en el corral de las pestañas. In English. Cock of dawn. They arrested him for excess of future, for the fury of his distinguished crest, for the sheath of his mouth of living bone, for his cracked and indecent feet, and the applause of the muted populace. They arrested him for airing with his song that the emptiness of night was ending, that the light of a sober cried infused its useful vibrant spectres in the skin of morning. They arrested him for excess of happiness, for making man grow toward his stature and cross new bridges with every step, and raise dust clouds of guitars on the fresh mass of the road. They arrested him, as is known, at all hours. They violated his apparent flourishing innocence. They bit his impatient edges, his due. But they had to let him repeat the bliss of feeling himself crier of the dawn in the corral of the eyelashes. So I will read in Hindi. This is a wonderful poem and images are so strong. भोर का मुर्गा. उन्होंने उसे गिरफ्तार किया कि उसके भविष्य में प्रवेश के लिए उसकी दिपदिपाती सबसे अलग दिखने वाली कलगी के लिए, उसके मुंह में चोंच की जिंदा हड्डी के लिए, उसके दरारदार भद्दे पंजों के लिए और उसकी चुप्पी जनता की तालियों के लिए उन्होंने गिरफ्तार किया अपना गीत सुनाने के लिए,
कि रात के सन्नाटे का अंत करने के लिए, कि गंभीर बांग की रोशनी के लिए, कि अपने यौवन से भरपूर चमक को भोर की त्वचा में भर देने के लिए। उन्होंने गिरफ्तार किया बेतहाशा खुशी के लिए, आदमी को अपने हक तक पहुंचाने के लिए, हर कदम के साथ नया पुल पार करवाने के लिए, गिटारों की मिट्टी की बदलियों को ऊपर उठवाने के लिए, सड़क पर ताजी काई के लिए। जैसे कि मालूम पड़ा कि वह किसी बाहर गिरफ्तार कर लिया गया, उन्होंने उसकी खिलती हुई सच्ची मासूमियत को ही खत्म कर दिया। उन्होंने उसके असहज किनारों और उसकी ओस को काट दिया, लेकिन उन्हें उसे अपनी खुशी को महसूस करते देना कि वो भोर की बांग देने वाला है अपनी पलकों के गोल घेरे में। शुक्रिया, थैंक यू। The next poem, I am going to read a couple of poems only in English, and then if there is a translation, the translation in Hindi. And I want to take just a few seconds to thank immensely Kritya for maintaining alive the hope of peace in the world through poetry. And this is an example. Thank you, Kamalakar, thank you, Rati, and thank you, fellow poets, for giving me this opportunity of being able to listen to you and grab some of the perceptions of your world vision. Giving life to death with the tongue, or the lingua omnia, the morte. Death is all bones, tongue is all flesh. Intemperate Babel that they call boneless is this diachronous recourse that leads us to the ideas. Tongue. Inflexible organization they call skeleton is this synchronic recourse that takes us from the world of ideas. Death. It's all a broken silence that nevertheless knows what it carefully makes and unmakes with diaphanous certainty. Death. It's all just a ball of words that strangely contains no precise idea of grammar, rhetoric, or prophecy. Tongue. Beneath the earth's ceiling, death, an invincible idea we inhabit without being aware of its limitless, infinite universality, dances madly day and night. Beneath the ceiling of the mouth, tongue, this powerful sensual muscle we use without even being aware of its well-defined avatars, moves madly day and night. No one is ever willing to lend a hand to the first, that hopelessly stops everything when it pierces laughter or the gaze of the living with its hollow eyes. Without the necessary help of head or senses, the second is merely a throwaway grope that initiates everything in the ear of the speaker who hears himself, or the listener who hears him, looks at him, and smiles. Tongue cannot pull out its own tongue. Death is unable to wish death upon itself. Constantly at the tip of the tongue, death is always sticking its tongue out and laughing at us. The end point of death is inhabited
The end point of death is inhabited by the ashes of a tongue that saves us from death, even if it can no longer laugh at anyone. Although it throws itself against time and freezes it, covering with its veil the windows of our eyes, scattering the red threads of our blood, bringing up short the pulse we maintain. Audacious, irrelevant, and emptying the tongue of its foundation, we must never fear death's rage, for she is nothing more than a story we have invented to give a bit of meaning to life and its ephemeral substances. On the other hand, we must be very afraid of tongue's rage every minute, because it plots against humanity and condemns it, leaving fame's bells shattered and reducing us to such bewilderment that even death itself takes off, dying of fright and crying at the edges of sorrow, for she lacks the words to admonish those who live from the mysterious origin of the tongue and its immutable consciousness. I have translated this poem, and it is so big and so deep. So this is my first draft of the translation, but I want to read it because anyway, because he read in English, so we all understood. But I wanted to read it in Hindi also, and it's very interesting. जवान से मौत को जिंदगी, मौत सिर्फ हड्डियां हैं, जवान जीभ सिर्फ मांस है। अनर्गल बड़बड़ाहट जिसे वे बिना हड्डी का कहते हैं, क्या ये ऐतिहासिक उपाय जो हमें विचारों की तरफ ले जाता है, यानी कि जवान? अटल व्यवस्था जिसे कंकाल कहते हैं, क्या यही समकालीन उपाय है जो हमें विचारों की दुनिया से दूर ले जाता है, यानी कि मौत? यह सब एक खंडित मौन है, तथापि जानता है कि ध्यानपूर्वक क्या बनता और क्या बिगड़ता है पारदर्शी निश्चिंतता के साथ मौत। ये सिर्फ शब्दों की गेंद है जिसके पास व्याकरण, आगम या नियम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जवान जीव, धरती के छत के नीचे मौत एक अदृश्य विचार है जिसमें कि हम रहते हैं, बिना जाने समझे इसकी अनंतता, असीम वैश्विकता जो दिन रात नाचती रहती है। मुंह की छत के नीचे जवान ताकतदार संवेदनशील मांसपेशी जिसका हम बिना इसके बनाए हुए रूपों को जाने उपयोग करते हैं, जो पागलों की तरह दिन रात घूमती रहती है। कोई भी नहीं चाहता कि इसकी ओर सबसे पहले हाथ बढ़ाया जाए, जो अपनी धारदार अट्टहास से और तीखी नजर से जीवितों की अपनी खोखली आंखों से हर चीज बुरी तरह से रोक देती है। सिर्फ यह संवेदनाओं के बिना कोई खास जरूरत के ये दूसरा व्यर्थ का अनुनाद है, जो कानों से शुरुआत करता है, जिसे वक्ता खुद सुनता है अथवा सुनने वाला खुद सुनता है। उसे मुस्कुरा कर तो देखो। जबान खुद अपनी जबान नहीं खींच सकती, मौत अपने लिए मौत नहीं ला सकती। जबान की नोक पर मौत अपनी जबान सटाए रखती है और हम पर हंसती है। मौत के अंतिम बिंदु पर मौत बसती है जबान की राख के साथ, जो हमें मौत से बचाती है, चाहे वो किसी और पर हंस ना पाए, चाहे वो अपने काल के विरोध में झोंक देती है और बर्फ कर देती है हमारी आंखों पर पर्दा बनकर, हमारे खून के लाल धागों को फैलाती हुई। हमारी नब्ज जिसे हमने दुस्साहसी, अप्रासंगिक और रिक्त बनाकर सही रखा, जवान इसकी नींव है। हमें मौत के क्रोध से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मात्र कहानी है जिसे हमने जिंदगी और नश्वरता को अर्थ देने के लिए गढ़ा है। दूसरी पल हमें हर पल जवान के क्रोध से डरना चाहिए, क्योंकि यह कभी भी मानवता के खिलाफ
षड्यंत्र रचती है और कभी उसे नकारती है। शोहरत के लिए घंटे को चकनाचूर कर देती है, हमें हताशा में डालते हुए कि मौत भी खुद कांप उठती है और दुख के तट पर रोने लगती है, क्योंकि उसके पास वे शब्द ही नहीं है जो जबान के पास होते हैं। जबान अपनी जबान बाहर नहीं खींच सकती है, मौत खुद अपनी मौत की कामना नहीं कर सकती है। हर पल जबान की नोक पर मौजूद मौत हमें अपनी जबान बाहर निकालकर हम पर हंसती रहती है। मौत के अंतिम छोर पर उसकी जबान की राख बसती है जो हमें मौत से बचाती है, भले अब वह किसी पर हंस ना पाती। भले वह खुद को समय के विरुद्ध झोंक दे और उसे जमा कर दे, हमारी आंखों की खिड़कियों को अपने घूंघट से ढक ले, हमारे लहू के लाल धागों को बिखेर दे, हमारी उस नब्ज को अचानक थाम ले जिसे हम बड़ी हिम्मत से बेपरवाही से हमने थाम रखा है। जबान को उसकी बुनियाद से ही खाली कर दे, फिर भी मौत के क्रोध से कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि वो एक कहानी से ज्यादा नहीं है जिसे हमने खुद ही गढ़ा है, और जीवन के हर नश्वर चीजों को थोड़ा बहुत अर्थ देने के लिए। दूसरी ओर जबान के क्रोध से डरना चाहिए, वो क्योंकि वो इंसानियत के खिलाफ साजिश रचती है, शोहरत की घंटी को चकनाचूर करती है और हमें हताशा में डाल देती है, दुख के किनारों पर बिलक कर रोने लगती है, क्योंकि उसके पास वे शब्द ही नहीं जिनसे वह उन्हें फटकार सके, जो जवान के उस रहस्यमय उद्गम से, उसकी अटल चेतना से जीवन पाते हैं। थैंक यू। Absolutely wonderful. Absolutely wonderful. Rati ji, you have done a fantastic translation of this amazing poem. I think, Ray, we have time for one more, maybe a short poem, please. Okay, then I think that we should read because Kritya has placed this subject of peace at the center of this reading. I think that it's appropriate to read my variations of Peace and the Dove. And I will read the poem in English, and then do you have the translation in Hindi of 3 variations on the theme of peace and the dove? I think Rati ji has translated only 3, so she perhaps doesn't have this though. Oh, not this one? Okay, but No, I'll read no, it. I have translated only three poems. I read all. Okay. So let me read this poem that has been translated to 40 some languages for obvious reasons. 3 variations on the theme of peace and the dove. Variation 1. So great is the peace of one dove that the experts on peace say one dove alone would be enough to spread over the earth all the peace that humans search for without knowing. Variation 2. So many are the doves of peace that the experts on doves say one piece alone would be needed to attract all the doves that hopelessly search for the human. Variation 3. If peace clothed itself as a dove, say the experts on humans, one piece alone would be sufficient to give its wings to the earth, making the human a dove. It is not much to ask of peace or the dove. Thank you very much. Thank you, Ray, for a wonderful journey that you took us on, and this closing poem is so moving. Thank you so very much. Now we turn to another amazing poet. I'm so happy to make the acquaintance of Carolina Rivera Escamilla and her poetry this evening. Thank you so much for joining, Carolina, and let me introduce her. Carolina is an educator, writer,
poet, documentarian, cultural activist, and organizer of literary community events. Born in El Salvador, she is a PEN America Emerging Voices Fellow. Her first collection of short stories was published in 2015 by World Stage Press. Her debut collection of theatrical poetry, In a Corner of Your Country, was published in 2023. The Spanish edition was released in March 2024 by Poetry Ambassador Press. She directed, wrote, and produced the documentary Manlio Argueta, Poets and Volcanoes, 2011. Her work has appeared in Collateral Damage, Women Who Write About War anthology, Migrant anthology, Somewhere We Are Humans, published by HarperCollins Press, the Bomb Literary Magazine, and the Altadena Poetry Review anthology, Central American Women in Diaspora anthology, among others. Over to you, Carolina, and I'm especially looking forward to listen to you because you are also a performance poet. So it is something that we are looking forward to. Over to you, Carolina. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you, Gati. Thank you to all of you. It is so amazing to be here. Beautiful to be here. Just want to add, Carolina, that Brijesh, I think, has translations of a couple of your poems. Shall we clarify which poems Brijesh has translated so that Carolina can read? Pause after reading those poems. Brijesh, which poems have you translated? First is Flowers of Fire. Second one is El Majote, 1981. And third one is Tracing Time. First one is Flowers of Fire. Flowers of Fire. Okay, what I'm going to do is to read it first in Spanish, then I read it in English, and then you will read it in Hindi, right? Yes, correct. Let's start the way then. These three poems. Yeah. 3 poems, right? So I'm going to start with Flores de Fuego. Flores de Fuego. Las mujeres en mi familia brotan flores de fuego, alumbran luz rojiza en sus cabelleras. Ellas surcan nubes bajo barrancos, lagos, ríos y mares. Manojos de leña son sus brazos. Sus manos son hornos en los que cobijan la lumbre de mi existencia, amasándola, mezclándola entre ceniza y ruda. Preparan el ungüento que frotarán bajo mis jóvenes pies para el cruce hacia el otro lado. Flowers of Fire. The women in my family sprout orange fire flowers, flowers of orange light in their hair. They furrow the clouds into ravines, lakes, rivers, and seas. Bundles of firewood are their arms. Their hands are ovens in which they shelter the light, kneading and mixing it into a paste with ashes and rue. They wrap the medicine on my young feet for the crossing journey to the other side. अग्निपुष्प। मेरे कुनबे की औरतें नारंगी अग्निपुष्प खिलाती हैं। मेरे कुनबे की औरतें नारंगी अग्निपुष्प खिलाती हैं, नारंगी रोशनी के फूल अपने केसों में। वे बादलों को चीरकर बनाती हैं खाइयां, झीलें, नदियां और समुद्र। उनकी बाहें हैं जलावन लकड़ी के गट्ठर, उनके हाथ
भट्टियां हैं जिनमें वे बना देती रोशनी को, उसे राख और बूटी संग गूंथ कर और पीस कर एक लेप बनाती हैं, फिर उस दवा को मल देती मेरे नन्हे पैरों पर सफर के उस पार जाने के लिए। उस दवा को मल देती मेरे नन्हे पैरों पर सफर के उस पार जाने के लिए। धन्यवाद। Wow, it's beautiful to listen. Now I'm going to read Tracing Time en español. Calcando el tiempo. Calcando el tiempo, tiempo y espacio, ser o no ser. Eres ansiedad indagando la fibra de lo que perdura, esa memoria intacta, la piel, la luz, la tarde, la noche, el día, tan ajeno el aire del pensamiento dislocado, fingiendo armoniosamente, desplegándose ante la orilla del tiempo exiliado, ante la orilla del tiempo exiliado. Y vos, anxiety searching the fiber of what is left, the memory untouched, the skin, the light, evening, night and day, so alien the air of thought, dislocated, pretending harmoniously unfolding before the shore of exile time, before the shore of exile time. And you were only transparency, snatching time and space, and you were only transparency, snatching time and space. समय का पीछा। समय का पीछा, समय और अंतरिक्ष है भी और नहीं भी। तुम बेचैनी में खोज रही हो, कुछ शेष है जिसके रेसे। समय और अंतरिक्ष है भी और नहीं भी, तुम बेचैनी में खोज रही हो जो कुछ शेष है उसके रेसे। वो अनछुई स्मृति, त्वचा, रोशनी, शाम, रात और दिन। विचार की बयार कितनी अजनबी है, विस्थापित ढोंग कर रही है, पर तालमेल के साथ खुल रही है। निर्वासित समय तट के सम्मुख, निर्वासित समय तट के सम्मुख। क्या तुम्हें याद है बहन, हमने अपनी जमा पलकें झपकाई और बरौनियां ऊपर उठाई, उस पूरे लाल चांद की ओर जो आम के पेड़ के पीछे गोवा जापा की पहाड़ियों के ऊपर था। हम उसे खाना चाहते थे, पर हम अपने मुंह में सिर्फ मुट्ठी भर धूल ही भर सके। हमने गंदला बारिश का पानी पिया, उन बच्चों की तरह जो गत्ते के घरों में रहते थे, जिनकी छतें लहरदार टीन की थीं, जिनका भविष्य सेना और गोलियों में उलझा था। युद्ध छिड़ गया और हम बच्चे नहीं रह पाए। हमने एक दूसरे को खत लिखना शुरू किया। तुमने मुझे लिखा कि वह रास्ता जिससे हम घर से स्कूल जाया करते थे अब छत बिच्छत लाशों से भरा पड़ा है। मैं तो पहले ही निर्वासन में थी, अब हम पुरानी लड़ाइयों के बच्चे आज के युद्ध में उलझे हुए हैं। बहन, निर्वासन ऐसा माइग्रेन है जो पूरे बदन में होता है। मैं आज भी उन पलों को कैद करना चाहती हूँ जब हम बच्चे थे। थैंक यू। Excellent poem, yeah. Thank you. And very, very good translation also, Brijeshi. Thank you. Thank you. Over to you, Carolina, for the next poem. Okay, yeah. So I'm going to read it in English first, this one. El Majote, 1981. El Mozote. Ajá, 1981. El Mozote,
1981. El Mozote 1981 in memory to the children of a massacre that happened in El Salvador in a village called El Mozote in 1981 during the Civil War. I'm going to read it in Spanish first and then English. Primero en español. El Mozote 1981. Abres tu puño, niña de 7 años. Y yo, luciérnaga, dudo en alzar el vuelo. Estrellas parpadeantes alumbramos tu miedo perdido dentro de ese universo. En la penumbra junto a la oscuridad del cantón El Mozote, orquestado por los grillos, caminas hacia el lugar en donde te educaron que Dios te iba a salvar. El soldado que carcajea saca la navaja, pero tú, niña, sientes millones de relámpagos palpitando en tu corazón. Palpitantes luces nocturnas animan en tu corazón y ves la hoguera y miras la hornilla donde tu madre sopla las brasas. Mientras se apagan las carcajadas nocturnas de los soldados, entras en la negrura envuelta en el útero de la tierra del Mozote. Vuelo de tu mano, llevando tus gritos encadenados entre los árboles de tu cantón. Tu lumbre permanecerá allí por siglos, cada vez que vuelvas con las niñas y los niños de aquella noche del Mozote. Thank you. Now, I'm going to read it in English. El Mozote, 1981. You open your fist, 7-year-old girl, and I, firefly, hesitate taking flight. Flashing stars will light up your fear lost within the space universe, in the darkness within the dark of this canton El Mozote. Orchestrated by crickets, you walk to the place where they thought you, God was going to save you. The laughing soldier brings out the razor. But you, child, you feel millions of lightning bugs throbbing in your heart. Pulsating night light animate your heart, and you see the campfire and watch the stove where your mother blows embers, and a soldier's nightly laughter dies out. You enter the blackness, embracing the wound of the earth of El Mozote. I fly from your hand, carrying your cries. I chain them among the trees of your village. Your light will stay there for centuries whenever you return with the children of the night of El Mozote. एल मजोटे 1981 एल सल्वाडोर के एल मजोटे गांव में हुए बाल हत्याकांड की याद में तुम अपनी मुट्ठी खोलती हो 7 साल की बच्ची, पर मैं जुगनू उड़ान भरने में सक जाती हूँ। चमकते सितारों, हम तुम्हारे उस भय को रोशन करते हैं जो खो गया उस विशाल ब्रह्मांड के भीतर। इस कैंटन अल मजोटे के घने अंधेरे के अंधकार में झींगुरों की धुन पर तुम उस जगह कदम रखती हो जहां तुम्हें सिखाया गया कि प्रभु तुम्हारी रक्षा करेंगे। हंसता हुआ सिपाही उस तरह निकाल लेता है बच्ची, पर तुम महसूस करती हो मानो लाखों जुगनू तुम्हारे दिल में धड़क रहे हैं। रात की स्पंदित रोशनियां तुम्हारे दिल में जान डाल देती हैं और तुम अलाव देखती हो, फिर चूल्हे को निहारती हो जहां तुम्हारी माँ अंगारों को फूंकती है। मानो सिपाहियों की रात की हंसी धीमी पड़कर बुझ गई हो। तुम प्रवेश करती हो अल मजोटे की धरती के गर्भ में समाये अंधकार में। मैं तुम्हारी चीखों को लेकर तुम्हारे हाथ से उड़ जाती हूँ। मैंने उन चीखों को तुम्हारे गांव के पेड़ों के बीच बांध दिया है।
सदियों तक तुम्हारी रोशनी वहीं रहेगी, जब तुम जब भी लौटोगी अलमजोटे की उस रात के बच्चों के संग, अलमजोटे की उस रात के बच्चों के संग। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। Thank you. मैं लास्ट आई वांट टू थैंक्स Prati ma'am, Kamlakar ji, and for this opportunity to translate and read these humanitarian and powerful poems. Thank you so much. Thank you, Carolina. Abhi, thanks, Madhu. Please read more poems. 2-3 poems you can read in Spanish and English. Okay. Carolina. Thank you very much. Yeah. I would like to share this poem since we are living in very strange times of war. And I'm going to read this one en español primero and then in English. ¿Te acuerdas, hermana? Parpadeábamos alzando nuestros juveniles párpados, nuestras pestañas hacia aquella luna llena roja. Detrás del árbol de mango, sobre los cerros de Guazapa, queríamos comérnosla, pero en nuestras bocas solo cabían puñados de tierra. Bebíamos agua de lluvia opaca como los niños de las casas de cartón, con techos de láminas onduladas, cuyo mañana se enredaban entre militares y balas. Estalló la guerra, dejamos de ser niños. Empezamos a escribirnos cartas. Me escribiste que el camino que normalmente nos llevaba de casa a la escuela está lleno de cuerpos mutilados. Yo ya estaba en el exilio. Ahora nosotros, los hijos de guerras antiguas, nos enfrentamos a las guerras de hoy. Hermana, el exilio es una migraña en todo el cuerpo. Sigo intentando atrapar esas horas en las que éramos niños. In English, do you already in exile? Now already in exile. Now we children of ancient wars tangled with today's wars. Sister, exile is a migraine in the whole body. I still seek to trap those hours in which we were children. Thank you. Do you want One or two more poems you can read. Okay. Please. Let me see if I can do this. A small one. Entre un recuerdo de claveles rojos, un viento helado, ese domingo encendí la vela. A la memoria de todos los exiliados, particularmente a los pueblos originarios de Manitoba, Canadá. Cerré la ventana, la nieve cayó, tiritas de papel blanco colmaron mis manos y pies. Aún así, seguí en silencio, entumecida por el suelo frío. Abrí aquel monedero, doblado como arco iris. Dentro cargaba una vela, y como no encontré ningún centavo en el monedero de mamá, agarré la vela. Esta la tomé prestada de ella el día que salí al exilio. Gracias. Thank you. Thank you. Wonderful. Madam Rati, would you like to share some responses? Oh, today was actually a poetry feast. All the poets had a wonderful thoughts and beautiful poetry. And though we actually, this is how we belong to different places, and we are bringing the smell and pain and sorrows of those places in our poetry, which are in total they become the our universal pain and universal reality. So when Nilim talking or reading poetry from Assamese, of course we get the smell of Assamia, that land. But at the same time,
we can connect because the same things, the same pain is also belong to us. Ashish was talking when he was talking because I'm sorry that we could not translate his poetry, very long poems were there, and some one or two were very interesting, like we are connecting with the animals and all. So he has written The Kingdom of Ants, and it was so nice. So beautifully he has explained. At the same time, the way Rei is connecting with the tongue and death, he has also connected to two things. So we feel that now when Rei's poems, really why I translated, because mostly the Brajesh duty is to translate poetry, but I read the poetry when you people give me. So I read the poetry, and when I read them, I feel like translating, especially this cock poem and this tongue and death poem. It was so deep and so detailed, which is the characteristic of not American kind of poetry. You understand what I'm saying you. You are different because you are bringing your pain and your sorrows from your land in memory or in your genes. So that is why your poetry is always the American poetry. When I read, I find that two different qualities. One, the people who come, when Carolina is talking about her childhood and all, this is a history kind of thing, because the land from which she has come, the pain is different. You want to go away from your land and you want to go back to your land. You want to smell new things, but you can't forget your originality or your smell of your place, and then pains and sorrows. All these things are haunting us. So this reading was actually very satisfactory. And very interesting. We will try to translate Ashish one or two poem and send you, so you people can also read. Because why I invited him, because he is a surgeon. He never goes on the poetry readings. He does not have any experience. He is a heart surgeon, and that is why he left early, because he may have some work on. So, but when I read his poetry, it was so philosophical. So I understand, when you are in pain, then only you become philosophical. And that is how, as a doctor, he's not talking about his work. He is talking about the philosophy, what we feel that we should talk. So today's reading was feast for me. I am thankful I made many mistakes while creating, because I'm old and I'm not well. Till evening, I was feeling whether I can sit for 2 hours or not. But now I am sitting and smiling. This is because of beautiful, good poetry. So this is how the poetry does to us. And I make some mistakes. And because of that, in between, there are some disturbance. For that, I'm sorry, but I'm trying my best. And Kamlakar, because of Kamlakar, because he is the power of this whole poetry presentation. He is doing everything. I am just working as a technician and at the back. So I'm thankful to Kamlakar, and Brajesh is always translating. Today I have stolen his work. I translated myself, because I am a translator also. I got a national award for translation in 2002 itself in India. So I love to translate good poetry. So that is why, and Carolina, so your poems were already translated by Brajesh, otherwise I would have tried. So that is why I said that I will translate more and more Spanish poetry, especially not European Spanish, the Spanish from the South American or American, Central American countries. So I hope we will get new poets. Thank you, Kamlakar ji. Over to you, sir.
Thank you. Thank you, Ratiji. You're very generous as always, and I'm so happy to hear that the evening's session and all these poems and the voices of all these poets has helped you to overcome the little discomfort. And thank you so very much. And as Rati Saxena ji was saying, we are reminded once again by the poetry this evening that poetry remains one of humanity's oldest and most enduring forms of conversation. Tonight, we have listened to poets from Assam, the Dominican Republic, El Salvador, and Mumbai. Different languages, different histories, different cultural worlds. Yet, through poetry, we discover not only difference, but also unexpected affinities. And Rati ma'am was talking about that. Our sincere thanks to all the poets, Nilim, Rei, Carolina, and Ashish. As Rati Saxena ji said, you really have given us a feast this evening. Wonderful poetry. Thank you so much. Our gratitude to Rati Saxena for hosting and sustaining this remarkable international platform and to her continuing support of poetic dialogue. Most importantly, thank you everyone for joining us this evening. May poetry continue to cross borders, create conversations, and keep alive our capacity to imagine one another's words. Good night, friends, and we look forward to meeting you again at the next session of Kritya Poetry East and West, which is going to be on June 20th when we bring an anthology of poetry for a book discussion. Thank you so much, all the poets. Thank you so very much for joining us tonight. Good night. Thank you. Thank you very much. Adios. Adios. Thank you. Thank you.